Hello everyone, this is Shahira. I welcome you to my channel P Insights with Shahira. Currently, I am working as a physical education teacher at EMRS और मेरा सिलेक्शन ESSE 2023 में हुआ था and it was the first ever recruitment for this post. So this channel is for all those aspirants जो physical education competitive exam की तैयारी कर रहे हैं. यहाँ आई विल डिस्कस द स्ट्रैटेजी नोट्स और मोटिवेशन अगर आप लोगों को कहीं पे अपना कॉन्फिडेंस कम लगा तो आज मैं बात करूंगी जो ESSE 2025 है रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है उसके बारे में इसमें जानेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं आई हैव मेंशन द स्क्रीनशॉट ऑफ EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम 2025 सो इसमें जो कि निकला था 19th of September 2025 and the last date of this form filling is 23 of October. So you have to be very careful and as soon as possible you just go for the form filling. So here you can see that there is the eligibility criteria and qualifications, unfair means practices and breach of examination rules. ये सब इस notification में डाला गया है. So I basically discuss about the things which are related to our subject, that is physical education. So here you can see that the number of vacancies for our particular subject, about 472 vacancies are there for physical education. So it's a huge opportunity. Just grab it, just go for it. So for male physical education teacher male, there are 173 um, total vacancies, and for unreserved category there are 73 vacancies. 17 vacancies are there for EWS category. For OBC NCL के लिए 46 के vacancies है यहाँ पे. For SC there are 25 vacancies. For ST category there are 12 vacancies. And for PET physical education teacher female के लिए total 299 vacancies है, and among that 124 vacancies from unreserved category and 29 vacancies are there from EWS. 80 vacancies are there from OBC NCL, and for an SC category there are 44 vacancies and 22 vacancies are there for the ST category. So here you can see for tier 1 there is total 100 marks और ये 6 parts में divided है, and in these 6 parts 5 parts will be same for each and every subject. So I am just dealing with the subject physical education. So for part 1 there will be general awareness and इसमें 10 marks होगा. For part 2 there will be the reasoning ability, इसमें 15 marks will be there. For part 3 knowledge of ICT, again there will be 15 marks. For teaching aptitude total 30 marks will be there, and ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, जो कि फर्स्ट पार्ट है पार्ट 1 experiential activity based pedagogy and case study based questions. There will be 20 marks, and for NAP 2020 there is 10 marks, total 100 marks. Apart from that, part 6 which is very much important क्योंकि it will be qualifying in nature, though it's
marks will not be added to your entire marks, but the language competency will be very beneficial, very essential for qualifying the exam. If you not qualify, तो आप लोगों को आगे का प्रोसीजर करने के लिए नहीं मिलेगा, आगे बढ़ने के लिए नहीं मिलेगा. So there will be general English and Hindi. It will be same for each and every one, and it will be compulsory for each and every one. Okay, and 10 marks each subject. And this part is qualifying in nature. And also you have to choose one regional language. You can choose Assamese, Bengali, Bodo, Dogri, English, Garo, Gujarati, Hindi, Kannada, Kashmiri, Khasi, Malayalam, Manipuri, Marathi, Mizo, Nepali, Odia, Santhali, Telugu, and Urdu. So ये in 20 जो लिस्ट है इसमें से आप लोग चूज कर सकते हो. अदरवाइज यू कैन ऑल्सो टेक Hindi or English as a your regional language, but the level of that will be a little bit higher. Okay, so आप लोग हिंदी या फिर इंग्लिश भी ऑप्ट कर सकते हो as your regional language, but it will be higher in level. Okay, so for tier 1 examination you will get 2.5 hour. आप लोगों को 2.5 घंटे मिलेगा, or you have to utilize your time very effectively. And in the tier 1 examination, there will be only the MCQ questions, and it will be obviously OMR based pen paper mode. And tier 2, there will be the combination of descriptive questions and MCQs as well, but again it will be on pen paper mode. Okay, so the choice of the examination papers, you have to choose whichever language you are comfortable with. Okay, there but the question paper will be bilingual. It will be in Hindi and English. And for section 6 part 6, you will it will be for the regional language. So whichever option you are taking, whichever language you are choosing, as per that आप लोगों को उस लैंग्वेज में ये वाला पार्ट आप लोगों को उस लैंग्वेज में मिलेगा. ओके, सो यहाँ पे फिर से वही दिया गया है कि टायर 1 प्रिलिमिनरी एग्जाम 100 मार्क्स. सो सारे सब्जेक्ट्स के लिए ये पार्ट 1 to 4 विल बी द सेम, और पार्ट 5 जो है दैट विल बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक. सो इट विल बी ऑन फिजिकल एजुकेशन, रिलेटेड टू फिजिकल एजुकेशन. और पार्ट 6 में जो है दैट इज ऑप्शनल exercise, optional regional language, you have to choose accordingly. So let's discuss about tier 2 examination. Again ये 100 टोटल 100 मार्क्स का ही होगा, जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा. तो ऑब्जेक्टिव में यू विल गेट 40 क्वेश्चंस and you will get 40 marks. There will be 15 questions and it will be 60 total, and the test will be of 3 hours. जैसे कि टायर 1 में हम लोग को 2.5 आवर मिला था, लेकिन विल गेट 3 hours फॉर टायर 2 एग्जामिनेशन. अब बात कर लेते हैं मार्किंग स्कीम की. फॉर ईच करेक्ट आंसर यू विल गेट 1 मार्क्स, और हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 1/3 मार्क्स की कटौती होगी. और अगर आपने कोई आंसर अनआंसर्ड रखा, कोई क्वेश्चंस अनआंसर्ड रखा, तो
you will be given no marks. You will give 0 marks directly. So हर करेक्ट आंसर को आपको OMR शीट में फिल करना है और अच्छे तरीके से डार्केन करना है। और अगर किसी सर्कल सही तरीके से भरा नहीं है तो मशीन उसे रीड नहीं कर पाएगा और आपका वो आंसर रद्द हो सकता है। और अगर किसी आंसर या फिर क्वेश्चन या फिर आंसर की में गलती है या फिर क्वेश्चन मिसप्रिंट है, आंसर्स में मिसप्रिंट है, तो एम्बिग्यूटी है, तो a policy decision will be taken by the authority. So आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा while filling the OMR sheet. First one, सावधानी से आपको आंसर देना होगा. Do not hurry at all. And random guessing से बचे cause negative marking है. और if you have any doubt in any question तो पहले wrong options को हटा दे. सही आंसर्स चुनने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ेगी. And use your time very carefully and effectively. So this is all for today for this session. So thank you so much everyone. Stay connected with P Insights with Shahira for updates, notes and motivation. And please do like, share and subscribe my channel. Believe in yourself and your journey starts today. Thank you so much.